Yeah. Hi. All right. Anyone? Anyone? Hello, Yes. ma'am. Yes. Hi. I'm Shubha here. Hi, Shiba. IDA. First of all, I would like to welcome you back. Yesterday's session was very wonderful. Thank you so much for that. Thank you. And our students really learned. They actually have questions, but yesterday they didn't have any questions for you because you were like so good. Thank you so much. Yeah. Because like, okay, ma'am, yeah, with you and I feel that, like doubts, whenever you get to know something new, na, so doubts automatically come up. So it's like, shuru mein lagta hai ki, haan, that's why I think we agreed for 2 sessions so that if anyone has any doubt and they sleep and then they decide that koi doubt hai, they can come up next day and they can ask. yes, ma'am, I just asked them right now, but they all said no, ma'am, koi doubt nahi hai. Everything was very good. And even I asked them if aapki speed agar kam karwani, but they were like, no, speed is fine. Like as you can draw very fast as compared to us and our kids. Yeah. Because you have the practice. And definitely I told them the practice is needed no matter in which field you are, whether illustrator, pattern making or anything. If you can't practice as you did yesterday, they'll not be able to do as fast as you're doing. Yes. Even I would say that I don't draw any faster. Like I take almost 2 to 3 days to complete one illustration, honestly saying. Like sometimes it's like when the work is and basically I take time for the commission work, like normal illustration that I draw, I can draw in 1 day, but still, time lagta hai, and it's okay to have like, give time to this, because even when I was doing my portfolio at that time, I took almost 2 to 3 days to complete one illustration. So it's totally fine that initially आपकी speed कम है, ठीक है, धीरे धीरे, because जब आप डिटेल काम करते हो at that time your speed will be very slow, because you have to keep your speed slow, because आप कोई उसमें रिस्क नहीं ले सकते हो, ठीक है. when you take risk, तो फिर उसके बाद आपका अगर मेहनत कर रहे हो and then it starts to like look like कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लगेगा, आपने 2 दिन मेहनत करी and then suddenly you feel like I can't put this in my portfolio or any file, so you have to like tear the sheets or you have to waste it. So that's why speed भी रखो, but still time देना बहुत important है illustrations को. Okay. Okay, ma'am, there's just one query I have to ask you. As we all are designers, we are learning to be designers. We all develop our own styles in croquis as well as in illustrations. Yes. So I want to ask that if someone has, like, as you say, everyone has their own signature and style. If someone's developing, like, as you said yesterday about the proportions has to be proper. If someone's hips are being broader that compared to the whole croquis, what should they do? Like that is their style. They've tried to change it, but they can't. Or like someone's head is bigger, someone's hands are being different. Like in last class, in yesterday's class, I told you that I drew a figure that was totally unappropriate. Yeah. Okay, like her neck was like turning, and then her legs were very long. So proportion is the way the body moves. Okay, it's like कि आपका जो leg है, that will only bend from the hip portion. आप ये नहीं कर सकते हो कि that you open the whole leg and you keep it like this. नहीं हो सकता. चाहे आप मतलब कितना जिम्नास्ट भी कर रहे हो, आप बैक साइड पे उसको नहीं कर सकते हो. ठीक है, आपकी अगर लेग फोल्ड होगी तो इट विल बी फ्रॉम द हिप एंड देन योर नी विल कम अप. ठीक है, दैट्स व्हाई like I told him yesterday, I showed you the illustration I did also. Yeah, the stick figure you showed us. Yes. So proportions are basically how the body is moving. आपके joints जो हैं body के, how they are moving. Of the body, as you're saying, proportions can be different, like according to the style and as hands you do it. Yes, the only thing is that your joints should be perfect. आप नहीं कर सकते कि अगर आप पूरी बॉडी को ऐसे करके वो कर दो. Yes, see, these are like very like normal things to understand कि आप कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकते जो नेचुरल नहीं है. ठीक है, your figures can be stylized, but they should actually have a human look. ठीक है, कि थोड़ा बहुत ऐसा लगना चाहिए. 1 minute. ओके, सो वो थोड़ा बहुत ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, ये मैंने एक मुझे प्रोपोर्शंस की नॉलेज है
and still I am planning कि मेरी जो stylization है, I want to keep the hip wider. ठीक है? So that's something, but वही है कि उन चीजों को जो natural चीजें हैं उनको भी mind में रखना है. ठीक है? So that's it. And anything else? No, ma'am, that was the only query I have. Like the flow of the body should be okay, but proportions can be different of the body parts. Yes. As the one draws it, they unka ek style signature ho jata hai. Like for Amit Agarwal, we see long necks and Yes. different styles from every illustrators. So that was my only query, nothing else. Yeah. So I think we covered the stylization part, and I think if you guys have any doubt in stylization, you can ask in between also. So about the portfolio, like, okay, we are going to start the portfolio. See, the portfolio आप जो भी आपके 3 साल की या 4 साल की मेहनत होती है ना, that comes inside your portfolio. ठीक है? It's not just कि file है and you have to show it in interview. It is something that you are taught and you have learned in your class throughout the 3 years in your college. Okay, so उस टाइम क्या है कि आपको इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी उस पर जितनी आपने 3 साल में सब मिला के फाइल्स पे करनी पड़ेगी. ठीक है? You have to develop your style also. You have to you have to make garments also. ठीक है? So it's like कि आपको at least सिर्फ पोर्टफोलियो जो आपका एक फोलियो है वो ही बनाने में आपको एटलीस्ट 3 to 4 months लगेंगे. उसके बाद देन आउटफिट्स आल्सो, एंड समटाइम्स कॉलेजेस हैव देयर फैशन शो ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो. ठीक है? दे हैव देयर थीम एंड दे हैव टू डिजाइन 4 or 5 आउटफिट्स, और आप एक आउटफिट भी डिजाइन कर रहे हो, लाइक वन आउटफिट यू आर डिजाइनिंग फ्रॉम योर थीम and collection wise. Okay, so students create their collection. It's basically आपको एक platform मिल रहा है जिसमें you are learning how to make a collection as a designer also. ठीक है? Later on when you are doing this. ठीक है? So in today's class I want you to write down few things. ठीक है? सब कुछ points जो है write down, they might help you, and also that every college has their own style of making portfolio. ठीक है? I am telling you my own style. अगर कुछ गलत भी है, I'm sorry all the teachers who are listening to it. ठीक है? कुछ गलत भी हो सकता है, because I made my portfolio in 2014 and I am just developing my style of that. ठीक है? I've researched a lot, and that time also I was researching a lot for my portfolio. So if I make any mistakes, please tell your students that you can change all these things. ठीक है? So I'm just telling you how I feel that my portfolio should be. All right. So in portfolio should show your own personality. ठीक है? How you actually are and how you are designing, what is your mind mapping towards the your illustrations or anything regarding that. ठीक है? So you have to make your portfolio so similar to your own personality, because all the designers also that you see, Sabyasachi, if you see, Sabyasachi looks like a person who is going to make the Indian bridal couture. He looks like it, even if he doesn't dress like that, but still he has a personality. You can actually see a lehenga and you see ye to Sabyasachi ka hai. ठीक है? Manish Malhotra has a different kind of style. ठीक है? So अलग-अलग designers. Papa Don't Preach by Shubhika, that is one of my favorite designers. She's so good at what she's doing, and how much color she put it. So your collection should show your own personality. Okay, so in in portfolios it's like कि आप अलग-अलग themes लेते हो. ठीक है? You get 2-3 themes. Sometimes college give you the theme, sometimes they give you the liberty कि आप अपनी theme खुद choose कर सकते हो. Okay, like in my time I was given one theme by my college and 2 themes I had to select. ठीक है? So how you actually select the themes. ठीक है? First we are going to talk about how you select the themes. ठीक है? Themes में you can choose anything. ठीक है? आप जो भी अपनी डेली लाइफ में आप कोई चीज देख रहे हो, इवन यू कैन चूज अ पेंसिल, एंड पेंसिल में कैसे आप रिसर्च कर सकते हो. एक पेंसिल है, हाउ द पेंसिल वाज मेड, पेंसिल का अंदर का टेक्सचर कैसा है, बाहर का टेक्सचर कैसा है, उसका जो लेड है उसका कलर कॉम्बिनेशन कैसे है. आप अलग अलग स्टाइल की पेंसिल्स होती हैं, कलर पेंसिल्स हो गई और स्पाइरल पेंसिल्स होती है. आप स्टेडलर देख लो, स्टेडलर का अलग एक डिजाइन है. सो आप अगर कोई भी टॉपिक चूज करते हो ना, यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव और थिंकिंग कि आप पेंसिल से क्या क्रिएट कर सकते हो. नॉट ड्रॉइंग, बट एक्चुअल में जो पेंसिल है वो क्या कर सकती है आपके लिए. ठीक है? पेंसिल हो गई, इरेजर हो गई, वॉशी टेप्स हो गई. ठीक है? कुछ भी. I'm just saying random words at this time and you can create a theme out of it. ठीक है?
So you have to open doors of your like creativity to enhance your portfolio in a way कि आप उसको इतना अच्छा बना दो कि कोई ये सोचे कि इसने सोचा कैसे. ठीक है, दैट इज समथिंग यू हैव टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि अगर आप अपनी थीम किसी को बता रहे हो ना, एट दैट टाइम दैट पर्सन बी लाइक कि यार ये क्या बना दिया. मैं कभी ये सोच भी नहीं पाता कि ये एक्चुअल में इसने पेंसिल से पूरी थीम रेडी कर दी है, ये पूरी कलेक्शन बना दी है. दैट इज द थिंग. ठीक है, सो अबाउट द थीम, आप थीम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो. ठीक है, आप एक थीम जो है, अगर आप तीन थीम ले रहे हो, एटलीस्ट 3 तो रखो. ठीक है, यू हैव टू कीप एटलीस्ट 3 themes फॉर योर पोर्टफोलियो टू एक्चुअली हैव अ वर्सेटैलिटी इन दैट. ठीक है, बिकॉज आप जो भी बना रहे हो, आप जो भी इलस्ट्रेशंस बना रहे हो, एंड आप जो भी चीजें डिजाइन कर रहे हो, इट शुड हैव अ इम्पैक्ट की आपकी जो कलेक्शन है दैट इज 3 different collection और 3 different ideas that you have. ठीक है, दैट मेक्स यू लुक लाइक कि हाँ आप अलग अलग चीजें सोच सकते हो. ठीक है, सो कीप एटलीस्ट 3 themes फॉर योर पोर्टफोलियो. ठीक है, आप उससे ज्यादा भी रख सकते हो, बट आई थिंक कॉलेज लेवल पे इट्स ओके टू हैव अ 3 themes फॉर यू, बिकॉज उसमें भी बहुत टाइम लगता है. ठीक है, about those themes, then you decide the themes. ठीक है, when I was working on my portfolio, what I thought कि one theme I'm going to keep a Indian, Indo-Western or Indian fusion kind of theme. ठीक है, so in college we gave the vintage kind of theme that we were given, like history of costumes kind of theme that we had. So at that time I could have made the like पुराने जमाने की जो भी dresses होती हैं, या फिर I could have made that, but what I did was कि I wanted to create something Indo-Western from that. ठीक है, so what I did, I took the elements from that. ठीक है, मैंने पुराने टाइप की एम्ब्रॉयडरीज ली, एम्ब्रॉयडरीज गोल्डन जरी वाली ऐसी एम्ब्रॉयडरीज होती है, मैंने उस टाइप की एम्ब्रॉयडरीज ली. ठीक है, और मैंने प्लीट्स वगैरह ली कि हाँ मैं प्लीट्स कैसे उसमें डाल सकती हूँ, कि मैं प्लीट्स को ऐड करूँ, जैसे साड़ी हो गई है कुछ, और जैसे पहले गाउन्स होते थे अलग अलग ऑल ओवर वर्ल्ड में. आप कहीं भी, हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट्यूम्स इज अ वाइड थीम कि आप वर्ल्ड में कहीं से भी आप कोई भी आउटफिट का एक वो उठा सकते हो. ठीक है, उसमें आपको ये चीज सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कहाँ से आउटफिट उठाऊं. You can take inspiration from Korean outfits or Chinese or Asian or US, UK, any person who is any dress outfit that was vintage or had a look of 1920s or 80s. ठीक है, sorry 1800. So at that time आप वहां से आप चूज कर सकते हो इजीली. एलिमेंट्स चूज करो, सेम आउटफिट चूज मत करो. ठीक है, बिकॉज आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको थीम समझानी पड़ेगी. ऐसा नहीं कि आप देख के आप कैसे करते हो. अब ऐसी भी थीम्स होती है, अर्धनारेश्वर यू कैन टेक इन दैट थीम कि आप अलग अलग जो आपके वो हो गए कि जैसे अर्धनारेश्वर, यू डोंट हैव टू मेक अ a person who is अर्धनारेश्वर. You can actually choose a outfit out of that कि आप 2 अलग अलग कलर्स ले रहे हो, आप उन और आप दोनों में अलग अलग एलिमेंट्स डाल रहे हो. ठीक है, so that is also something that you can choose. ठीक, आप थीम का नाम जो भी रख रहे हो ना, you have to know कि आप उस थीम को दिखाओगे कैसे. ठीक है, it's sometimes it feel like कि आप वो थीम ले रहे हो and then like someone asks you कि इस थीम में एक्चुअल में है क्या, and you took a very difficult name or very difficult theme, like I said अर्धनारेश्वर. ठीक है, now a person will see the outfit कि इसमें अर्धनारेश्वर है क्या. You have to make that person understand कि इसमें अर्धनारेश्वर का क्या है. You can start it by like telling these points to your teacher also कि आपकी टीचर पूछ रही है कि हाँ ये थीम है क्या एक्चुअली में. So you should know how to show that theme कि आप उस थीम को इतनी एक्साइटमेंट से जैसे आपने बनाया है आप दिखा भी पा रहे हो, आप लोगों को बता भी पा रहे हो कि this is my theme. ठीक है, these are the elements that I'm going to use in this, और these are the elements I have used in this. और वो बंदा जो भी वो पर्सन है वो उसको देख रहा है, that person is looking at your portfolio sheets and then you see हाँ इसमें है. You can see the elements of अर्धनारेश्वर. So you should know how to show your theme, और आपको इतना open होना पड़ेगा about your themes कि आप लोगों को बता सको. That is very important when you are in an interview. ठीक है, an interviewer person who is going to open your portfolio and then that person can ask you कि आप ये theme आपने कैसे choose करी. ठीक है, what are the element that you choose from this theme. So
वो सारी चीजें आपको कोई भी पूछ सकता है. सो यू शुड नो व्हाट योर थीम्स मीन्स. ठीक है, चूज योर थीम्स वेरी वाइजली. ठीक है, उसमें आप कोई भी ऐसी चीज मत करो जिससे आपको आपको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है. सो आपकी थीम ऐसे स्टैंड आउट होनी चाहिए. ठीक है, कैन यू शो समथिंग? Yeah, in the end, I don't have that right now. I'm just randomly saying the names. Okay. So I'll look for it. Okay. If I find something, I can upload on my page also. Okay. Like the themes that I'm talking about. So we can discuss that. तो आप गूगल पे भी आप Pinterest पे you can search की अर्थ नारिशमेंट थीम kind of, उसमें elements आपको क्या क्या मिलेंगे. ठीक है. Then ठीक है, then themes. Okay, themes you can decide as per your own creativity and everything. ठीक है, I had my themes in a different way. I thought कि at least I'll have one commercial outfit. I'll like one commercial theme. Commercial theme होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है in your portfolio, because in the end आप एक commercial industry में काम कर रहे हो. ठीक है, आप जितने मर्जी उल्टे सीधे एलियन लुकिंग आउटफिट्स आप बनाओ, that is totally your creativity, but you have to keep at least one theme that shows कि you can create commercial outfits. Either you are creating commercial outfits as per India, or you're creating as per the like any fashion sense, or any like Italy or US, wherever people wear that kind of outfit, or a person is ready to wear that kind of outfit. So you have to show कि मेरी एक theme commercial है, और उसमें I can create commercial outfits that normal people or models or anyone that looks normal. Okay, you have to create at least one theme that is normal. ठीक है, one theme you can create that is totally out of the blues. I had one theme which is Mermaid and Poseidon. That is totally like Mermaid and Poseidon that are not like from the same story. They are people from this different universe, but I'm keeping their fashion or any elements from them, and I'm adding this in the the theme. All right, 1 minute, I'll add some. Okay, so I can add it at that time. So उसमें क्या है कि I chose lingeries, because mermaid has a element कि आप उसमें lingerie use कर सकते हो. ठीक है, because आप उसमें आपको जरूरत नहीं है कि आप normally when people hear कि mermaid से gown हो जाएंगे शायद. So I chose lingerie. ठीक है, lingerie in the sense I was inspired by the Victoria's Secret fashion show. Again, I made this in 2017 or 18. ठीक है, so at that time my creativity level was something else. Right now is something else. So at that time as a student, I thought of that कि I'll make a lingerie outfit, and then I chose different elements like shells or the color of the theme. ठीक है, color कौन से मैं use कर सकती हूँ इसमें. ठीक है, और all those things I choose. ठीक है, so that is how you can select the themes. Okay, the next thing is, अब ये themes आपकी select हो गई, आपने अपने outfits बनाने शुरू कर दिए. So what all the elements that you need for a portfolio? How to show your portfolio कि आपका जो portfolio का cover है उसको देख के ही people start to read. That is something else. Okay, so portfolio में either you can keep a file, up to you. Right now I think there is a trend, or I have seen a lot, and I also wanted to do it at that time, but I didn't find the resources to do that. Okay, you can get a mount board that you can cut the area, you can write it down like VIBHU's portfolio. That is why, and you can choose a theme for the cover also. You can get it cut, the mount board आप cut करा सकते हो easily. आपको बहुत सारी cutting machines और ऐसे आपको areas में मिल जाएंगी. ठीक है, वो easily available भी हो जाती है, but आपको उसके लिए पता करना पड़ेगा. I couldn't do it because मुझे नहीं मिली थी. ठीक है, so you can choose a file, normal the A3 size portfolio, or you can choose, और आप बनाओ तो उसको landscape में बनाओ. Portfolio looks very good when you make it in landscape. Either आप एक album की तरह बनाओ, you can also get it like album cover होता है ना, उस तरीके से भी आप बनवा सकते हो. And you can have like the spirals inside it. या फिर आप जो mount board है उनको जो आपकी normal file आती है उसमें you can attach the front or back mount board. ठीक है, so cutting machine से you can get the the part, the written part, you can get it cut. So वो बहुत अच्छा लगता है, एक बहुत ही अच्छा look देता है, and it looks very professional. ठीक है, you can choose that.
for the portfolio. So in the portfolio, when you open the portfolio, then there should be a resume. You can either make the resume as per the size of the portfolio, or you can make it in a different way, and you have kept it there. आपने वो रखा हुआ है, but start में आपके resume होना ही चाहिए. Indeed, शुरू में आपका resume इतना भी ज़्यादा वो नहीं होगा, but still your resume should have everything that you have done till now. ठीक है, आप अपनी छोटी छोटी achievements भी होती हैं, add them. ठीक है, I was very over dramatic towards my the resume. I made it in Photoshop at that time. I added my picture and I made the background design. I wanted it to look like a designer's resume. So wherever I went, everybody was like, your resume looks very different. ठीक है, at that time I didn't know कि आप word में भी ऐसा बना सकते हो. I was very obsessed with Photoshop at that time. So I chose Photoshop, उसमें background देके and छोटे छोटे text लगा के. I don't know if I still have it. I'll show you with the portfolio. ठीक है. So you can do it like this. So after resume, it should be about your design style and what exactly you have in your portfolio. ठीक है. Like everybody say कि आप एक जैसे books होती है, उनमें फ्रंट पे आपको कुछ भी ऐसा दिख जाता है, जैसे आपको पता लग जाए, बैक पे आपको दिख जाता है दैट व्हाट इज द स्टोरी. सो यू हैव टू शो कि आपकी एक्चुअल में आपके पोर्टफोलियो में है क्या. इट कैन बी अबाउट योर थीम, इट कैन बी अबाउट योरसेल्फ. रेज्यूमे में आप अपने बारे में लिख रहे हो, दैट इज टोटली फाइन, बट रेज्यूमे इज समथिंग दैट इज प्रोफेशनल. बट पोर्टफोलियो इज समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू यू. आप लाइफ टाइम उस पोर्टफोलियो को रखोगे अपने पास. ठीक है, सो राइट समथिंग डाउन अबाउट योरसेल्फ एंड हाउ similar, or how that theme or how that portfolio is very close to you, how it is very similar to you. ठीक है, so you write it down कि आपने themes के बारे में, कि what kind of themes that you, और आपकी जो mind mapping थी, आपने किस तरीके से research करी, about your research, कि आपने जो भी कहाँ से research करी है इस portfolio को लेके, आपने किन designers को इसके लिए अपने इंस्पायर हुए हो उनसे, एंड राइट दोज थिंग्स डाउन. तो एक अच्छा एलिमेंट क्रिएट हो जाता है, और कोई भी उसको रीड करता है ना, इफ अ पर्सन रीड समथिंग फ्रॉम योर पोर्टफोलियो ना, इट शुड बी सो अप टू द पॉइंट कि आप ज्यादा उसमें स्टोरी भी नहीं लिख रहे हो. यू कैन राइट एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स, दैट इज टोटली फाइन. आपको पूरी कहानी भी लिखने की जरूरत नहीं है. सो राइट 4 to 5 लाइन्स एंड दैट्स टोटली फाइन टू यू. ठीक है, नाउ like इसमें you keep your genre also, कि आपका पोर्टफोलियो एक्चुअली किस थीम से या किस एरा से बिलोंग करता है. ठीक है, आपका जो भी आपकी थीम्स हैं, which era you have choose. ठीक है, you can either choose कि मैं अलग अलग टाइप के एराज को ले रही हूँ, कि उसमें मैं कौन से एलिमेंट्स, if I want to choose the elements from the 80s and how I am going to like convert it in today's fashion. Alright, so everybody say अनारकली का फैशन शुरू से चलता आया है, बंद होता है, then it starts again in a different kind of way. कि पहले अनारकली इतना नहीं, प्लाजो के साथ कोई अनारकली इतना नहीं पहनता था, चूड़ीदार के साथ बहुत चलता था एक टाइम पे, बट नाउ people wear it with the प्लाजो and गरारा and any kind of outfit. So that is why कि आपको अलग अलग, आपको अपने फैशन को इस तरीके से दिखाना है कि वो अलग अलग एराज में बहुत अच्छा चलने लग जाए. Alright, I hope you're not bored. I talk a lot. Okay, so No, ma'am, not at all bored. okay, We are actually getting knowledge from you. Okay, that's great. So about the mind mapping, okay, you choose 3 themes. आपने themes अपनी choose कर ली है, and then you choose different kind of themes की आप जैसे एक theme आपने choose करी है, and then you do the mind mapping कि आप उस थीम से रिलेटेड आप कौन कौन सी चीजें चूज कर सकते हो, उसके रिलेटेड आप जो कलर्स आप कौन कौन से चूज करो. आपको अपना पोर्टफोलियो पूरा रेडी करने से पहले अपना एक रफ, आप एक नोटबुक पूरी डेडिकेट करो पोर्टफोलियो के लिए. आप उसमें अलग अलग थीम्स के सेक्शन बनाओ कि मैंने इस थीम के लिए मैंने जो भी रिटन में मेरा जो कंटेंट होगा, आई विल राइट इन दीज पेजेस. ओके, देन राइट समथिंग कि आपको जो भी आइडिया आ रहा है, राइट इट डाउन. ओके, सो फॉर थीम्स की आपको क्या है कि आपको रिसर्च किस तरीके से की, और जितना आप उस चीज को छोटा कर सकते हो ना, आप ज्यादा वाइड स्टार्टिंग में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको अपना जो उसका मिडिल का जो डिस्टेंस है ना, वो आपको उसको कम करना पड़ेगा कि आप कुछ चीजों में आप सिमट जाओ. एक्चुअल में आई एम सेइंग कि आपने जैसे अपना थीम रेडी करी है, आपने उसमें कलर्स देखने हैं, आपके कलर्स कौन कौन से आप चूज कर रहे हो, तो स्टिक टू दोस कलर्स.
ठीक है, आपने 4 से 5 कलर ले लिए हैं, इट्स टोटली फाइन, यू कैन स्टिक टू दोज कलर्स। बट आपको ऐसे भी करना होगा कि आप उन कलर से बाहर अगर जा भी रहे हो, सो इट इज नॉट कि आप अपने कलर बोर्ड में वो कलर ऐड नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, बट यू आर एडिंग दैट कलर इन योर इलस्ट्रेशन। सो उसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन जो होता है ना वो नहीं बैठता। सो आप जो भी आपके कलर्स हैं उनको राइट इट डाउन। ओके, जो भी, जैसे आप रेड लेना चाहते हो, अलग अलग जो भी कलर्स आप लेना चाहते हो, यू कैन राइट इट डाउन, तो वो इजीली आपका हो जाएगा। आपका ये कि आपने सेलेक्ट कर लिए, अब यू हैव ऑल योर कलर्स रेडी, नाउ you have to move towards the design. Okay, if the class runs out, then you have to click on the same link and you can join again. Okay, so about the like colors आपने ऐड कर लिए, आपने कलर्स अपने जो डिसाइड कर लिए, ठीक है, कलर बोर्ड हो गया, उससे आप अपना कलर बोर्ड बनाओगे। बोर्ड जो है हमेशा एंड में बनाओ, बिकॉज क्या होता है कि आप बोर्ड बना लो, देन यू सडनली थिंक कि यार ये कलर भी बहुत अच्छा लगेगा। सो जो आपका फाइनल कलर बोर्ड्स, मूड बोर्ड्स, एवरीथिंग, डोंट मेक इट बिफोर यू मेक योर इलस्ट्रेशंस। ठीक है, इलस्ट्रेशंस में बिकॉज आप बहुत सारी चेंजेस भी करते हो, आप एलिमेंट्स चेंज करते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो। सो डोंट मेक समथिंग परमानेंट अनलेस योर इलस्ट्रेशंस आर रेडी। आपको लाइक प्रोफेशनली, और मेरी टीचर ने मुझे ये कहा था कि मेक द मूड बोर्ड्स पहले। सो आई वाज लाइक कि आई वाज अ बिट रफ काइंड ऑफ, वेरी रॉ थिंकिंग आई हैड, कि मैं पहले इलस्ट्रेशन सारे रेडी करूंगी, आई रेडी ऑल द इलस्ट्रेशन, आई सी कि इसमें कलर्स कौन कौन से मुझे ऐड करने हैं, मैं इलस्ट्रेशन में कलर ऐड कर लूंगी, एंड देन आई विल डिसाइड कि मैंने उस जो मेरा कलर पैलेट है या कलर बोर्ड है उसमें मुझे किस तरीके से एलिमेंट्स ऐड करने हैं। ठीक है, साथ साथ let me show you my portfolio also, so that ऐसे मुझे देख देख के आप बोर ना हो। All right, so if it's visible to you, ठीक है, I'm only showing you my digital portfolio, my or like the actual file. This is the main mistake we make by making, yes, that is the thing कि आप जो भी mistake बना कर रहे हो, that is because you are choosing all, making all the boards before, because आप बाद में elements change नहीं कर सकते हो, आपके restrict हो जाते हो। illustration बनाते time you should always be very free कि आप क्या बनाना चाहते हो, आप elements जो मर्जी change करो, कोई problem नहीं है, and end में आप जो boards है आप उसमें लिखो, बिकॉज इलस्ट्रेशन बनाते टाइम में ना यू विल हैव सो मेनी थिंग्स इन माइंड कि आप कोई भी नई चीज भी देखते हो, आप ऐसे अगर आपने मूड बोर्ड सारे एक साथ बना लिए, एंड ऑलवेज वर्क ऑन वन थीम एट वंस। ओके, अगर आप तीनों थीम एक साथ यूज कर रहे हो या तीनों थीम एक साथ आप स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि यू विल बी वेरी कंफ्यूज्ड। सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ एंड वर्क ऑन वन थीम एट वंस, चाहे उसमें 1 महीना लगे, चाहे उसमें यू हैव 2 months, ठीक है, बट वर्क ऑन वन थीम एट वंस। चाहे आप इलस्ट्रेशंस बना रहे हो, इलस्ट्रेशन, इफ योर इलस्ट्रेशंस आर डन ना एट दैट टाइम, आफ्टर दैट आपको कलर बोर्ड्स एंड ऑल, यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। बट इफ योर इलस्ट्रेशंस आर नॉट रेडी एंड you move to the new theme, you somehow take all the elements that you took, like you chose from one theme, you can take it from the other, to take it to the other theme also, ठीक है। So that's why don't work on 2 or 3 themes at once, just work on one theme, ठीक है। This was the cover of my portfolio. Again, I was not that good at that time, so it's very normal because I made one before, but then I wanted to have a very simple one. So this was my portfolio. I had a portfolio written here, and then I had my name, and then the course that I was doing, okay, fashion design. All right, so this was my first theme again, or a lot of elements I didn't add in the digital one, okay. This was the theme board. Okay, I wrote the theme like black swan and snowflakes. I wanted to work on a black and white theme, but I didn't want to write black and white. So what I chose the black swan. Black Swan is a movie that came in 2010, I guess. So it was basically about a black swan and like white swan. That was kind of movie. So I watched that movie and I felt very like I really liked the movie. So I wanted to make it a theme. So black swan and snowflakes. White, basically I added white as a snowflake. Snowflake jo hota hai, that is white. So that was the name of my theme. Okay? If person thinks कि black swan and snowflakes,
थोड़ी देर बाद they'll start thinking हाँ black and white तो है, but if I write black and white सीधा सीधा, so they'll be like हाँ ठीक है black and white है. So आपको ऐसे अलग अलग words या अलग अलग कोई भी उसके like similar words हो गए, कुछ हो गए, आप वो चीज करके करो and it will look good. ठीक है. So my theme and like what kind of outfit that I wanted. ठीक है. It was cocktail party and bridal wear. ठीक है. So I wanted कि black is basically black, people wear black and cocktails. So I wanted to like take black as a cocktail theme. ठीक है. So it was one theme where I wanted to add two kind of outfits. ठीक है. So cocktail party and bridal wear. So I wrote everything down कि मुझे जो उसकी inspiration है वो कहाँ से मिली and what kind of elements, and if you want I can upload this portfolio somewhere and you can actually have a look at this. Okay. Oh, So yes, ma'am. You could do yes, that. so, That will be very helpful for the yeah, students. because honestly I would say ये इतना भी अच्छा नहीं है, but still I feel कि as a student I did a good job at that time, but right now if I judge my portfolio I don't like it. Okay, so that is why I'll upload it so that you can have a look and you can read it down like how I wrote something. So उसमें क्या है कि I wrote it like मुझे वो themes की inspiration कहाँ से मिली है and what kind of outfit that I want to design and what kind of elements I'm going to use, how I'm going to use. See, snowflakes, it's white and I wanted to make like snowflake embroidery on the bridal outfits. Okay, so that is how I did it. So black swan is I took the elements of swan, like his wings, like wings and the elements and fur, and I took that kind of elements in that. So my themes were basically like my two themes were basically commercial. Okay, so bridal outfits are also commercial, cocktail gowns are also commercial. Okay, but I just added some elements जो कि उसको थोड़ा सा enhance कर दे. ठीक है. The second was the accessory board. Okay, what kind of accessories I'm going to use. These everything I did in Photoshop. Okay, everything that I'm showing you at this time, I made this in Photoshop. All the elements, जैसे black swan related colors हो गए और क्या-क्या elements हो गए, like see. So जो भी चीजें मुझे inspire कर रही हैं उस time पे about my accessories. Okay, like see this. The personality of the models or whoever is going to wear the outfits. So this is kind of like it's written black swan here. So I didn't know if it was written on that time or not. So the shoes and everything that I want to add, the purses that like inspire me regarding that, and see. So मैंने ऐसी चीजें add करी. Then the color board, all the colors that I was using. See, I was only using white, red and black. Okay, red was basically I'm using in both white and red, the black outfits. All right, so उसमें I added different colors. ठीक है, मैंने white कहाँ use किया है, wherever I use black. तो colors I've added. Colors में क्या है कि आपको सिर्फ color palette में वो नहीं add करना, आपको Pinterest पे you will get really good image quality also. So I have downloaded everything from Pinterest. Okay, so उसमें क्या red में अलग-अलग elements search करो. See, you can see there is a car here. There is a red car here. There is a like black lipstick and a white tiger, red nail polish, and the red eye, or see dandelions and all the elements like the lace fabric here. Red cloud. So that cloud gave a very dramatic look to the board. Okay, so you can work on, and also Photoshop skills are very necessary in this. So आपको Photoshop skills आनी चाहिए. I was not that good at Photoshop, but I learned by making this. Okay, so you don't have to be very good with Photoshop, but you should know how to actually create boards like this. Up collages. When I was making this at that time in my college, there used to be the manual portfolios. Okay, when you have to cut every image and you have to paste it. I wanted it to be in a way कि मुझे ज़्यादा हाथ से काम ना करना पड़े. Only thing I was making was the illustrations by hand. Okay, everything else I did digitally. See the garment board. What kind of garments inspired me? Lace fabric. Okay, this flowy black net sleeves, like
these kind of fabrics that I wanted to use, like these kind of elements that I wanted to add in the outfits. See the cocktail gowns. This is a gown with the fur, lace, again lace. Okay, the bridal outfit. So all the elements are different elements I added, gown. Okay, so everything is here. What kind of garments that I'm going to make. Okay, so these kind of garments, like you can add in the garment board. Okay. Okay, so I think it's about to finish. So you join again.